Okay, we have discussed this in the last lecture. Features of marketing. Till here I had explained you ideas, goods and services, systematic process, marketing environment, integrated approach, society means everything included. All these things are needed. Now features of marketing in detail you can see here. That is the explanation of each point. That is customer focus. What is the main motive of marketing? Marketing is customer centered. Always remember, marketing function is a customer centered. They want to what they do, they first do the survey. After doing the survey, they find out the needs and requirements of the customers, and accordingly the product is prepared. Depends upon the needs and requirements of the survey of the study. Earlier time, when marketing used to be done, in earlier time, that moment people used to the company people, like company never used to bother about the customers, what customers want. What company is preparing, that has to be sold. That was the issue, and people has to buy that only. But now the system has changed. मतलब मार्केट कंडीशन पूरी तरह से चेंज हो गई है. मार्केट अभी कैसा हो गया? कस्टमर सेंटर हुआ. मतलब कस्टमर्स को क्या चाहिए, उनकी ज़रूरतें क्या है, लाइफस्टाइल क्या है, आजकल की नीड क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, उसके हिसाब से वो जानने के बाद, वो स्टडी करने के बाद, what they are doing, they are preparing the product. Accordingly the production takes place, and then the products, that is finished goods, are available in the market. So we focus on customer satisfaction. What is the object oriented? Business तो करना ही है, profit तो चाहिए, but with the profit, main important person, very important thing is that the satisfaction of human wants. You need to earn profit with the satisfaction of customer. ये main objective हो गया. Next is marketing is said to be art and science. I am just revising again, which we have studied in the last lecture. So marketing is said to be art and science. Why it is said to be art? Because it is artistic, it is creative, it is innovative, and that's why we call it as art. And why we call it as science? Because it is following a systematic body of knowledge. It stays on, or it follows the facts, the truth, the reality, and the principles. That is a procedure wise, stepwise procedure, and that's why we call it as art and science. You can see marketing is said to be continuous activity. Continuous क्यों बोलते हैं? क्योंकि marketing अगर एक बार marketing किया, promotion किया तो हो गया? No, you have to do it continuously for each and every time. Like you can see on the TV also, on your television or on your internet, continuously ads come pop up in on your screen. Why? ये याद दिलाने के लिए. Marketing ऐसी चीज है which has to be done continuous. It cannot be only one time investment. It has to be conducted continuously, and that's why it is called as regular activity. It is a exchange process. Marketing is nothing but exchange process. Why exchange process? क्योंकि हम लोग एक्सचेंज करते हैं कुछ ना कुछ चीजें. सेलर्स एंड बायर्स के बीच में एक्सचेंज होता है, गुड्स का एक्सचेंज होता है, सर्विसेज का एक्सचेंज होता है. गुड्स खरीदने के बाद, प्रोडक्ट्स खरीदने के बाद, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस होती है, पैकेजिंग की प्रोसेस होती है. सो अगेन दीज आर द एक्सचेंज प्रोसेस. यू कैन सी मार्केटिंग एनवायरनमेंट. व्हाट इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट? जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स हो रहे, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड अपने आसपास होता रहता है, चेंजेस होते रहते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जैसे अभी क्या हुआ, मास्किंग इज कंपलसरी. मास्किंग कंपलसरी है, फिर सैनिटाइजर है, तो उसके लिए मशीन्स का इनोवेशन हुआ है. मशीन्स के टेक्निक के वजह से यू आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी. तो ये है तुम्हारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट. इंटरनेशनल एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल मार्केट में क्या सिचुएशन है, वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है, उसका असर हर जगह पे होता है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज मार्केटिंग एनवायरनमेंट. एंड ऑल दीज फैक्टर्स, दे आर इन्फ्लुएंसिंग द activities, they are influencing the market, and due to these activities market is decided how and what marketing has to be done, how the customer focus, needs, requirements are changed. All these things are depending. Next is your marketing mix. Marketing mix matlab product,
प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट क्या है कंपनी का, प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस है, व्हाट आर द इनपुट्स, व्हाट आर द न्यू वेरिएशंस वी कैन सी इन द प्रोडक्ट, that comes under product. Price, yes, price keeps changing. Sometimes it is rising, sometimes it is decreasing. So inflation and deflation is seen in the price, or sometimes reasonable, normal price, average price. So all these are the marketing mix, factors of marketing mix, or elements of marketing mix. All these together make marketing. All these together we call it as marketing. Place yani maybe some products are available at local place, from that place it is available, made available to the global market, or to the state market, or to the national market. प्रमोशन, ऑब्वियसली प्रमोशन अलग अलग तरीके से होता है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए. इवन गवर्नमेंट, व्हाट गवर्नमेंट डज, they announce for certain schemes, or they announce for certain facilities. That facilities they keep on promoting, means what, they keep on advertising through many ways. That is your marketing mix. Integrated approach means all together, coordinated with all the functions of marketing are together coordinated, like functions like production, finance, research, purchasing, warehousing, transportation, banking, communication, packaging, etc. These are the different functions of marketing. These are together. So marketing includes integrated approach. Integrated approach means all together, these functions together. Marketing, we call marketing as commercial and non-commercial organizations. Why commercial and non-commercial? Kyunki commercial means we are talking about business purpose, like any industry or any company, they also need to do marketing, they also adopt marketing and strategy and planning, as well as NGOs. If social welfare organizations are there, non-profit organizations are there, or non-governmental organizations are there, even they need marketing. They also follow the marketing. Why they need marketing? Because it is very very important for all. That's why we call it as commercial and non-commercial organizations. Under non-profit or NGOs, you can see your hospitals, the religious places, educational institutions, they do marketing, they do promotion of the institute. Why they do? For beneficial, for the benefit of the people, welfare of the people. Okay, marketing follows production. Precedes means follows production. Marketing, after we do marketing, means after we study, after we identify, we recognize, we analyze customers' needs, requirements, changing technology, changing pattern, changing fashion. What we do? We go for production. That's why marketing follows or precedes production. Our next point, next topic, next concept is functions of marketing. What are the functions? You can see on the chart, on the slide. That is marketing research. Marketing research, just now I told you what we do. We study, we analyze, we identify, we recognize, and we try to find out. That is marketing research. Means रिसर्च करते कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चलेगा नहीं चलेगा. हाउ वी डू द रिसर्च? बाय giving lucky coupons, by filling the feedback form, by asking the people in different places, at malls, at different shops, or through phone calling. All these are the ways to do the research, to conduct the research. And based on the research, we take the decision further what we are supposed to do. Next is your branding. मार्केटिंग करना, मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ब्रांडिंग है. एक नया प्रोडक्ट है, नई कंपनी इज एंटरिंग इनटू द मार्केट, द प्रोडक्ट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड, द प्रोडक्ट हैज टू बिकम पॉपुलर, द प्रोडक्ट शुड हैव सम गुड क्वालिटीज एंड हैज सम यूनिक फीचर्स, तब वो ब्रांड बनेगा. लाइक नाइकी इज द ब्रांड, मैकडोनल्ड्स इज द ब्रांड, KFC is the brand, then Puma is the brand. Like all these are brands. So you are supposed to do the branding. They become brand not within one day. Over the time, over the period of duration, they had become the brand. Branding
So marketing function includes branding of the particular product and company. Next comes your advertising. Obviously, without advertising, awareness will not be created. People will not come to know what is which company has entered into the market by, through which product. Like for example, now in the lockdown period, we can see different types of mask. First, mask was compulsory. So from where we will get mask? General normal kind of mask was available everywhere. Now you will find all the big brands have entered into that, and they are, what they are doing, they are marketing it. They are showing different colors, different prints of mask, and this is how you can wear, this is the benefit of the mask. It is very protective and all. What they do, they do advertising. Even for sanitizer also, which sanitizer is good, which company has 100% formula of sanitization to keep you protected and to keep you healthy. So this is what advertising. Next comes your product design. What kind of design should be the product का डिजाइन कैसा होना चाहिए, उसका कलर, शेप, साइज, whether it is attractive or not. If it is attractive, it will attract more customers. So all those decisions has to be taken, all those things has to be decided, and all these things, all these functions are the part of marketing. Next comes your after sales service. It is very important. I'll tell you one case study for after sales service. There is a company called Videocon, which you all know about it. Videocon, when Videocon launched in India, जब इंडिया में वीडियोकॉन ने लॉन्च किया, तभी क्या हुआ था, वीडियोकॉन का मार्केट जो था, स्लोली इट एंटर्ड. दैट टाइम नोबडी न्यू अबाउट वीडियोकॉन. लेकिन उन्होंने एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी की, उन्होंने वेरिएशंस लाए अपने प्रोडक्ट्स में, वेराइटीज लाए थ्रू डिफरेंट कलर्स. लाइक फ्रिज वगैरह तो उसमें कलर्स लेके आए, और थोड़ा सा रेट भी रीजनेबल था, फीचर्स इंक्लूड किए. पीपल स्टार्टेड डिमांडिंग वीडियोकॉन. वीडियोकॉन का डिमांड इतना बढ़ा था एक टाइम पे कि पीपल वेर ब्लाइंडली टेलिंग ईच अदर, एंड पीपल यूज्ड टू बाय वीडियोकॉन ओनली. अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, सबको सजेस्ट करते थे. तो मार्केट बहुत हाई था. तो उन लोगों ने, लेकिन वहां पे जब वो एकदम नंबर 1 पोजीशन पे पहुंचे, दैट मोमेंट, बाय दैट टाइम दे मेड वन मिस्टेक. दे डिडंट फोकस ऑन अदर एस्पेक्ट. दैट एस्पेक्ट वाज दिस आफ्टर सेल सर्विस. इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो व्हाट, लोगों ने प्रोडक्ट्स तो खरीदे, रेफर भी किया, और लोगों को, लेकिन कभी कभी कोई प्रोडक्ट में डिफेक्ट आने लगा, या फिर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होने लगे. They started calling Videocon people, and those executives, they said कि हमारा sales executive आएगा आपके पास मेंटेनेंस के लिए, he will check and he will do all those things. लेकिन उन लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया. उन लोगों ने सिर्फ एडवर्टाइजिंग और नए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में ध्यान दिया, यानी प्रोडक्शन में ध्यान दिया और सेलिंग पे ध्यान दिया. आफ्टर सेल सर्विस पे ध्यान नहीं दिया. तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनके जो एग्जीक्यूटिव्स, जो वो प्रॉमिस करते थे कि आज आपके यहाँ पे एग्जीक्यूटिव आएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, द पर्सन नॉट यूज्ड टू टर्न, एंड ही यूज्ड टू टर्न आफ्टर 5 days, 8 days, 10 days. तो लोगों को प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस होने लगी, एंड स्लोली इसका मार्केट डाउन हुआ, इसका पावर कम होने लगा, इसका डिमांड कम हुआ. एज डिमांड कम हुआ, दैट वाज द टाइम, वो टाइम दूसरे कंपनी ने कैचअप किया. दैट वाज LG एंड Samsung. They both these companies entered into Indian market and they focused on after sale service, क्योंकि उन्होंने केस स्टडी कर लिया. उन्होंने देखा वीडियोकॉन के बायर्स, उनके कस्टमर्स हमारे पास कैसे आ रहे, क्यों आ रहे. दे ट्राई टू स्टडी, उन मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि ये प्रॉब्लम है, एंड दे हैड मेक श्योर कि अगर किसी भी पर्सन का कंप्लेंट आ रहा है, उससे पहले जैसे कंप्लेंट आ रहा है, इमीडिएटली एक्शन हैज टू बी टेकन, एंड दिस इज व्हाट दे इम्प्रूव्ड, एंड वीडियोकॉन गॉन डाउन. तो वीडियोकॉन को कोई पूछता नहीं था. नाउ लेटर ऑन, after few years, again it came into the market. It is there, settled, but not that powerful, not that number 1 place. Next is your salesmanship and personal selling. You can see the salesmanship and personal selling. What we do, we need to do salesmanship, personal selling, sales promotion. शॉप में जाते तो सेल्स एग्जीक्यूटिव व्हाट दे से, दे विल ट्राई टू कन्विंस यू, दे विल ट्राई टू कम्युनिकेट कि ये ऐसा प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसके फायदे बताएंगे. तो ये टेक्निक यूज करना.
Pricing, obviously it depends upon the locality, it depends upon the type of the consumer, it depends upon the standard of living of that particular area. Physical distribution we had discussed before in the place. Physical distribution means to distribute, transportation comes under that. From one place जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहां से हर एक कस्टमर तक पहुंचाना प्रोडक्ट, दैट कम्स अंडर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इट इज कॉल्ड एज CRM. CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छा रखना है, यानी उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने, उनको टाइम टू टाइम अपडेट देना है कि ये नया प्रोडक्ट आया नए फीचर्स के साथ, ये होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज MIS. मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन्स लाइक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, मार्केट में नया नया ट्रेंड कौन सा आ रहा है, सो व्हाट चेंजेस कैन बी मेक, व्हाट आर, अगर हमारे कस्टमर्स दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए दूसरे ब्रांड की तरफ जा रहे तो क्यों जा रहे, ये सब चीजें कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना एंड अकॉर्डिंगली टेक द डिसीजंस. पैकेजिंग, पैकेजिंग का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. व्हाई? बिकॉज पैकेजिंग अगर अट्रैक्टिव होगा एंड प्रोटेक्टिव, पैकेजिंग के दो फायदे होते हैं, टू बेनिफिट्स आर देयर. वन, पैकेजिंग शुड बी वेरी प्रोटेक्टिव फॉर द प्रोडक्ट and as well as if it is attractive, people will look after that particular product and they will buy for that particular product. जैसे scent, perfumes की bottles, when you see the shape, see the packaging and all, you feel like अरे it is very beautiful, I should take that, it is very attractive, so that is how you go for it, correct? So ये होता है packaging. Thank you.